Hello dear students of class 8, how are you all Student, I am a science teacher DPS sir from LPM Public School Gola Bajar Gorakhpur. Student, as you know, our chapter 12, that is sound, is under process of revision, and in my previous video I have explained you about that sound travels in a medium, sound travels in a solid medium, in a liquid medium, as well as in a gaseous medium. So sound in liquid and sound in solid I have explained you. Just you tap on the door outside and the person inside could hear the sound, tapping sound from the outside of the door. That means the door is a solid object, made of solid object, and the material that is present in the door that helps in transferring the sound from outside to inside. So here you can see the sound is traveling from a solid object through a solid object. Next, that the student, about the sound travels in liquid. For that you just take an electric bell, or you can say take a bell and just put it in a water tub, and just, or you can say a alarm clock, with a waterproof alarm clock. Put that alarm clock in the bathtub, and just when the alarm clock will ring, you will listen the sound outside the water. This shows that sound travels through liquid medium also. Next, student, gaseous medium. Sound in gases. Most of the things we hear from the dawn to dusk, most of the things that we hear from dawn to dusk are the sound waves. मीन्स सुबह से लेके शाम तक जो भी आप सुनते हो, जो भी ध्वनियाँ आप सुनते हो, ये हवा के थ्रू आपके कानों तक पहुँचते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, इससे ये क्लियर हो गया कि हवा के माध्यम से साउंड ट्रैवल करता है. नाउ फॉर दैट, फिल अ बलून विथ एयर. हवा से एक बैलून को भर लो एंड प्लेस इट नियर यू, ये अपने कान के पास लगाओ. अब अपने नाखून से धीरे धीरे उसको स्क्रैच करो, उस बैलून को. आपके कानों तक वो आवाज़ सुनाई देगी. दैट मीन्स वो बैलून को स्क्रैच करने, बैलून के अंदर जो हवा भरा, वो हवा जो है उस साउंड को कैरी करते हुए बैलून के दूसरे किनारे तक वो साउंड आ रहा है. फिर दूसरे किनारे में जो बैलून का शीट है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे क्योंकि अंदर के हवा का वाइब्रेशन से. और फिर उस शीट के बाहर में जो हवा है, वो फिर उस वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए कान के पर्दों तक वो वाइब्रेशन पहुंचाता है. In the above activities, we have seen that the propagation of sound through the solid, liquid and gases. अभी ऊपर इसके बारे में मैं बताया कि साउंड कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफर होता है. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ साउंड ट्रेवल फास्ट इन सॉलिड. ये भी बता दें, सबसे जल्द साउंड अगर किसी में प्रवाह होता है तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में होता है. और सॉलिड में साउंड की स्पीड होती है 5960 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में साउंड की स्पीड 5960 मीटर होती है. और वहीं पे लिक्विड में उसकी स्पीड, स्लो इन लिक्विड विथ स्पीड 1531 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड. एंड सबसे स्लोअर स्पीड एयर में, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड. सो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ये वो स्पीड हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस मैटर में. दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली, placed in the solid, so the sound energy is not wasted in the transferring. साउंड एनर्जी वेस्ट नहीं होता, तुरंत बगल बगल में सारे मॉलिक्यूल सटे रहते हैं, तो वेरी इजीली तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है और ऐसे करके वो दूसरे किनारे तक झट से पहुंच जाता है. पर गैसेस, लिक्विड में थोड़े मॉलिक्यूल्स दूर होने की वजह से एक मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन दूसरे मॉलिक्यूल्स से पहुंचाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा डीले साउंड निकलता है, जैसा कि सॉलिड के कंपेयर में. गैसेस के में उसके मॉलिक्यूल्स और लिटिल बिट फार अपार्ट होने के कारण थोड़ा और टाइम लेता है एक मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स तक पहुंचाने में, और ऐसे करके अंत तक उस वाइब्रेशन को पहुंचाने में थोड़ा और डिले हो जाता है, इसलिए उसकी स्पीड और धीमी मानी जाती है. नाउ डियर स्टूडेंट, it is told that
speed of sound is lower than that of speed of light. Light travels more faster than sound. That's why during lightning we see the lightning first, then after few seconds we listen the sound. Now speed of light in air is 3 into 10 to the power of 8 meter per second, which is much faster than the speed of the sound. That is why in rainy season the flash of lightning is seen first and the sound of thunder heard later. Now dear student, what will happen if there is no air surroundings in the condition of vacuum? So sound doesn't travels in a vacuum. Dear student, for that I want to explain. Just take a alarm clock. Okay, dear student, take a bell jar, a round shaped bell jar. Okay, keep here keep here the alarm clock. Okay, and when this alarm clock will ring, its vibration will be heard. Its vibration will create the vibration on the air molecules inside that glass chamber, and that is and when that vibration strike the wall of this glass chamber, the glass chamber also starts vibrating, and then this vibration is passed in the outer air, which could be heard by the person sitting there by the help of its ear. If suppose that if suppose that I have taken the bell jar and there is the alarm clock kept, and there is through the cap I have taken the air out. I have made this glass chamber totally vacuum by taking out the air. Now this alarm clock will start ringing, but the sound is not coming outside. And we are not able to hear. Why? Because there is no any medium. There is no any medium present surrounding the clock that could take the sound from inside to outside. That means, dear student, in case of vacuum, the sound could not be able to travel from one side to another. So, dear student, sound in vacuum, we have learned that presence of a medium is a must for propagation of sound. That means a medium is very much required for the passing of sound. In the absence of medium, the sound can't travel and nothing will be heard in vacuum. As vacuum has no molecules which can vibrate and carry sound waves. In space, when a person goes in space, okay, because there is no air in the space, so it is useless of just trying to speak in the space, because there is no air, the sound will not come out from the mouth of that space person, and the sound will not be able to come out from the mouth, nor the sound will travel, because there is no air present in the space. There is vacuum, so one can't hear anything. There is complete silence. The astronauts communicate with each other over the radio set, because radio waves can travel through vacuum. They can just talk by the help of they can just communicate by the help of radio waves. You can see here the student something given the speed of the sound in dry air. Dry air means when the air is not moist. So dry air speed is 332 meter per second. And if the because the air is dry, so the molecules are a little far apart. But if the air is wet,
that means within the molecules of air there is the molecules of water also, that is making the molecules closer. So little bit faster the sound will travel in the wet air. Now in water, in case of water, the water molecules are more closer, so the speed of the sound is that 1500 meter per second. And in case of steel, as because steel is solid object, then in the solid object the molecules are very much closer, that means totally close together each other. So in case of steel, as because it is solid, the speed becomes more faster, that is 5000 meter per second. As well as in wood, near about 4000 to 7000 meter per second. So there is a complete silence. Okay, dear student. Now, sound doesn't travel through a vacuum, that I have just explained you by drawing an example, drawing an experiment of bell jar. Now, dear student, the actual illustrate that sound waves requires a material mediums, okay, for passing. So, just for example, you can say, just now I can say that the sound waves requires a medium, just like a medium of solid or liquid or gas. Now, dear student, characteristics of vibration. What do you mean by the characteristics of vibration? Sound is a type of energy. Sound is a type of energy which, uh, sorry, sound is a type of energy made by vibration. So when anything vibrate, then only sound could be created. Vibration is a to and fro or back and forth motion of an object about a fixed position. From the fixed position, when any object is moving to and fro means again and again repetition is done, front and back. Okay, for example, when a string of a guitar is plucked, जब गिटार की स्ट्रिंग को अगर हम छेड़ेंगे तो ये स्ट्रिंग जो है ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और साउंड क्रिएट करेगा. इट्स वाइब्रेशन कैन बी एबल टू सी, इसका वाइब्रेशन जो है हम देख सकते हैं. द string vibration up and down, but in some cases, किसी किसी केसेस में द वाइब्रेशन आर नॉट विजिबल. वाइब्रेशन बिल्कुल समझ में ही नहीं आता, दिखता ही नहीं है, क्योंकि इतना फास्ट होता है कि वो वाइब्रेशन समझ में नहीं आता है. इन दैट केस, ओके डियर स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट. ओके, not able to see them vibrating, but we can feel the vibration if we put our hand over the front of it throat. पर हमें बोलते वक्त थोड़ा वाइब्रेशन आपको फील होगा आपके थ्रोट रीजन में. ओके, सो इसका मतलब है कोई भी चीज़ वाइब्रेट होता है तभी साउंड क्रिएट होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, वी नीड a small rubber or a ball. We need a small rubber or a ball or a pebble or a string or fixed support and a watch. So many things inside that has been set up to create the sound. Now, dear student, every vibrating particles has three characters. Every vibrating particles has got three characters. Okay, first is the amplitude, second is the time period, and fourth is the, so, sorry, there are only three characteristics, that is the amplitude, time period and frequency. Amplitude, time period and frequency. Now dear student, let's start about the amplitude. Dear student, let's start about the amplitude. The maximum distance covered by a vibrating मीन्स कंपन करने वाली वस्तु जो सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम, ओके, द मैक्सिमम हाईएस्ट वाइब्रेट करते हुए वो सबसे उच्चतम श्रेणी पर कब गए, और उसी सेम पोजिशंस को यू कैन से मीन पोजिशंस मीन्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वाइब्रेशन और स्विंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन मीन्स उसके स्टार्टिंग पोजिशन से निकल के उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद फिर वापस उस एक्सट्रीम से दूसरे मीन को क्रॉस करते हुए दूसरे एक्सट्रीम तक यू कैन से कवर करना, उसे वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन माना जाता है. सो
द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, सो जो सबसे अधिकतम दूरी, उसके मीन पोजीशन जो सबसे अधिकतम दूरी वो यू कैन से गया होगा वो बॉब, उस सबसे अधिकतम दूरी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ए बी इज एन एम्पलीट्यूड, चूंकि ए एंड बी is the amplitude of a vibrating object. Since distance, so dear student, amplitude जो एक बॉब अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम दूरी तक जाता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एंड उस मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड। नाउ डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। माय डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। इन द above activity, when the pebble goes from one extreme position to the other extreme position, that is C, means जब आप अपने एक सबसे अधिकतम एक किनारे से जब दूसरे किनारे तक पहुंचता है, ओके, और दूसरे किनारे से फिर वापस अपने पहले किनारे पर आता है, तो ऐसा करते वक्त कितना समय लगा होगा, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। In the above activities, when the pebble goes from one extreme position B to the other extreme position C and then back to B और फिर वापस B तक आया हो, it is said to complete one oscillation. इसे कहते हैं complete one oscillation. The time taken by the vibrating particle to complete one oscillation is called time period. Okay, dear student? The time taken by the vibrating particle, उस कंपन करती हुई वस्तु का एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कितनी टाइम लगा, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन ऑक्सीलेशन इज़ वेरी स्मॉल, और एक ऑक्सीलेशन को निकाल करने में कितना समय लगा, ये बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल, मीन्स नियर अबाउट सेकेंड में इसके आंसर आएंगे। इसलिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए क्या क्या टाइम लगा। इसीलिए हम कुछ नंबर ऑफ ऑक्सीजन को एक साथ काउंट करके टाइम निकालते हैं कि सपोज दैट 10 ऑक्सीजन एक मिनट में किया, एक मिनट, यू कैन से एक मिनट मतलब 60 सेकेंड मान लो आप। सो नाउ 60 डिवाइड बाई 10 अगर कर देंगे तो ये मालूम चल जाएगा 10 से 60, यानी कि वन ऑक्सीजन करने में 6 सेकेंड लगते हैं। ओके, वन सेकेंड डियर स्टूडेंट, सपोज दैट 10 ऑक्सीलेशन अगर 10 बार चक्कर लगाता है, और 10 बार चक्कर लगाने में उसने 1 मिनट टाइम लिया, 1 मिनट टाइम मतलब आप मान चलिए 60 सेकेंड। ओके, अब तो एक ऑक्सीलेशन करने में कितना लगा होगा, तो 60 डिवाइड बाई 10 एंड 10 से 60, दैट मीन्स 6 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। ओके डियर स्टूडेंट, 6 oscillation per second. So this, the time what we have taken out, 6 oscillation per second is called the time period. Okay dear student, is the time period. Now frequency, what is frequency? The number of oscillation made by the vibrating object in 1 second. एक सेकेंड में अगर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कंपन करती हुई वस्तु कितने बार वाइब्रेट किया, ओके, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन 1 second इज नोन एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द हर्ट्ज, जिसे हम एक्सप्रेशन हर्ट्ज में करते हैं, दैट मीन्स Hz। सपोज अ पेंडुलम बॉब टेक 10 सेकेंड, सपोज अ पेंडुलम बॉब टेक 10 सेकेंड टू कंप्लीट 10 ऑक्सीजन, एक पेंडुलम जो 10 ऑक्सीजन कंप्लीट करने में 10 सेकेंड लगता है, दिस मीन्स इट इज़ कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन इन 1 second। इसका मतलब 10/10 यानी कि 1 सेकेंड। देयरफॉर फ्रिक्वेंसी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हर्ट्ज, मीन्स कितने फ्रिक्वेंसी अपॉन कितने टाइम, सो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई टाइम इज वी गेट द हर्ट्ज, आंसर इन हर्ट्ज। Okay dear student, frequency in hertz Hz, that means the number of vibration in a given time taken. When n is the number of oscillation made by the vibrating body, okay, the time taken by for n oscillation is in second. So it is telling that, so time taken to complete one oscillation is in second.
The frequency of a simple pendulum is very low. So the frequency of a simple pendulum is very low, and okay, dear student, the frequency of simple pendulum is very low, and the very low frequency sound produce a simple pendulum cannot be heard by our ear. Means frequency एक simple pendulum का जो sound होता है वो इतना धीमा होता है कि उसको सुन पाना मुश्किल है. Now, dear student, characteristics of sound. Sound के character क्या हैं? We can easily recognize the voice of our friend. हम आसानी से अपने मित्र का आवाज़ पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं. The sound produced by one friend is different. एक मित्र का साउंड जो है दूसरे मित्र के साउंड से बिल्कुल अलग है. सो कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनसे हम फैमिलियर हो जाते हैं. फैमिली मीन्स रोजाना सुनते सुनते वो हैबिचुअल हो जाते हैं. ओके, पर अगर सपोज दैट यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ एनी साउंड, आप किसी साउंड को पहचान नहीं रहे हैं, अचानक से कोई नया साउंड आया, तो जब तक आप उस व्यक्ति को या आप उस जो भी है XYZ उसके मुंह से निकला हुआ आवाज़ अगर आप सुनते हैं और उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, तो जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, आप वो पहचान नहीं पाएंगे कि किस व्यक्ति की आवाज़ है. पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप रोज़ मिल रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को आपकी ब्रेन रिकॉग्नाइज कर चुका होता है एक बार, ताकि दोबारा कभी भी वो व्यक्ति अगर आपसे बात करे तो आप बिना देखे भी बता सकते हो कि हाँ, इस व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ, ये XYZ जो भी नाम है उस व्यक्ति को उसके साउंड के हिसाब से आप पहचान सकते हो. नाउ साउंड इज ऑफ थ्री टाइप्स. साउंड तीन प्रकार के होते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, sound is of three type that I will explain on next day, student. So today till here, thank you, have a nice day, student.